मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा सेक्टर 16 की अंतिम दिन समापन विसर्जन हो चुका है। जारी किया जा मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम शुरू हो रहा है।
गेट पर भंडारा शुरू कर देला जैसे भगवती गेट पर भंडारा शुरू करूं जगन्नाथ भगवती के विजय समारोह का आयोजन गेट पर भंडारा शुरू हुए भंडारा पात्र मतलब गिलास या डिब्बा या कोनो चीज प्रधान करत वाला जे जल छै से अवश्य घर में जेबाक चाही अगर घर में छिड़काव करबाक चाही अरे ई यज्ञ का जल है और यज्ञ का जल परम कल्याणकारी छै लेकिन भीड़ नहीं हेबाक चाही भीड़ नहीं हेबाक चाही अपने सब चीज फेंक लिया जो पात्र कोनो हुए एक पात्र अपना ल लिया और में जल देल जाए जे जल अवश्य घर ले जाए जयंती अपराजिता और जल कलशक ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है अच्छा जब लेकिन तो लगे लिखल क्षेत्र कहलिए जो अगर व्यवस्था है हमारा लग में पर्याप्त है वो अगर जो है तो एक आदमी के ड्यूटी लगा दो जे ला जवाब चाहिए जब कोनो एहन पात्र हुए तो
देख रहल छी मिथिला टीवी। भंडारा के पंडाल में ले जाके भंडारा में पंडाल के भीतर में ले जाके अंतिम दिनक विसर्जन के बाद मूर्ति जल प्रवाह कार्यक्रम चल रहल अछि।
एक बार प्रेम से बोलिए राम नारायण की, राम नारायण की, राम नारायण की, महिषासुर मर्दिनी की। आज सबके संस्थान में सब भक्त के हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब हम सब जगह प्रतीक्षा है सब के ओर बढ़ लिया। तो सबसे पहले भगवती के रीत संग्राम सुनती ना, जिनका जोर देख कर ताली बजा दियो ना सब। भगवती हिंकर भंडार सब दिन हर मन कामना का फल से पूरा हो। और हम सारी जिनका जिनका भगवती के साड़ी के प्रसाद चाहिए वो हमारा काम आता सुभाष जाए से अपने को 250 रुपया प्रसाद के दाखिल के 250 रुपया जमा कराकर अपन नाम लिखवा लिया। अपना बारी के प्रतीक्षा करो। हम नाम कमेटी यहाँ के नाम पुकारा, जिनका जिनका नाम है अपना बारी बारी से प्रसाद ला लिया। खोज साड़ियों में बांधल गए, पहले खोज के अलग से डिमांड नहीं कर गए, साड़ी के खोज साड़ियों में बांधल चाहिए। और कमेटी अगर अहम व्यवस्था कर दिया, ये खोज बोल के खाली चेक कर चेनते बांधल जा रहा है। तो श्रृंगार के भी सामान वही नहीं, पहले अलग से आदर सीमा श्रृंगार के डिमांड नहीं कर गई। जब जनते खोज से बांधल वही भगवती के द्रव्य दे दिया ना, जो पैसा दे देना या जेब में जेवर हो जाए, ये जेब से निकाल कर उनके के वापस क्या जा रहा है प्रसाद भगवती के खोज साड़ियों में खोज माने हरी अलग से खोज दे दे। जिनका साड़ी नहीं मिला तो उनका खोज देवन साड़ी बदला के उपरांत। अपने देख रहे मिथिला सेवा संस्थान पर संभवतः बैठल
अब हम कनिकाल के लेल कमर से देख ल रहल छियै पुनः सीधा प्रसारण अपने के दिखायब भसान के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण पुनः हम थोड़ी देर के बाद में दिखायब तब तक हम कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहल छियै।
आगे मिथिला टीवी के तमाम दर्शक के पुनः एक स्वागत। अपने के हम सीधा प्रसारण लाइव कार्यक्रम दिखा रहा है। सेक्टर 16 रोहिणी सर मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विसर्जन के कार्यक्रम के आप अंतिम चरण पर पहुंच गए। अब मूर्ति विसर्जन मूर्ति के लग जल में विसर्जन करवा के कार्यक्रम आप शुरू है। इस सीधा लाइव प्रसारण अपने देख रहा छी रोहिणी सेक्टर 16 से। सीधा लाइव प्रसारण सेक्टर 16 रोहिणी से अपने देख रहा छी मिथिला टीवी पर। मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम कड़ी मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम आप प्रारंभ हो चुकल है। सेक्टर 16 रोहिणी से मिथिला सेवा संस्थान द्वारा एक्स्ट्रा वो बच्चा समझना काची ना ये बनवा ले खुला हुआ है कुछ अंकल हम YouTube पे आ रहे हैं। मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया। ये भैया एक
अभी हम एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और पुनः हम फिर सीधा प्रसारण लाइव आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।
सही है। मिथिला सेवा संस्थान सेक्टर 16 वही सीता प्रसारण मिथिला टीवी पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के आप मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम शुरू भ रहल अछि। आप मूर्ति के लऽ कऽ जल प्रवाह करऽ के लेल कमिटी के द्वारा व्यवस्था कयल जा रहल अछि। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम सीधा प्रसारण सेक्टर 16 रोहिणी से मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम कार्यक्रम
मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम कार्यक्रम मूर्ति विसर्जन मूर्ति के छठ सभा में तैयारी कयल जा रहल अछि। सेक्टर 16 रोहिणी से दिल्ली, भारत के राजधानी दिल्ली से सेक्टर 16 रोहिणी से मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम कार्यक्रम के राजधानी दिल्ली से सेक्टर 16 रोहिणी से मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम कार्यक्रम सेक्टर 16 रोहिणी से मिथिला सेवा संस्थान द्वारा सेक्टर 16 रोहिणी से मिथिला सेवा संस्थान मूर्ति विसर्जन की तैयारी कयल जा रहल अछि। चाबी एक तो जल्दी खोलना पड़ेगा
हो जाइए बात।
माइक दे दो यार। सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम दुर्गा जी के विसर्जन में जल प्रवाह में प्रवाहित जा रहा है। मिथिला सेवा समिति के सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतिम चरण विसर्जन के बाद सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम कार्यक्रम कल में प्रभाव हो जा रहा है। हमने सीधा लाइव टीवी पर सेवा संस्थान द्वारा के बाद मूर्ति के विसर्जन कल में प्रभाव बहुत ज्यादा तैयारी हो रहा है। सेवा संस्थान सेक्टर 16 द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के अंतिम कार्यक्रम मूर्ति विसर्जन मूर्ति के जगह का वाहन पर राखल के बाद में जल प्रवाह के
जिला सेवा संस्थान द्वारा अगरबत्ती रखियो सर्जन के कार्यक्रम जिला सेवा संस्थान रोहिणी सेक्टर 16 सीधा प्रशासन सर्जन के विधान बेटी के जखन माथा में पैसा दे जाए तकर बावजूदो घंटा 2 घंटा लागि जाए सीधा प्रत्येक चीज छूट जाइत अछि। अपने देख रहल छी की छूटैत अछि, की व्यवस्था करऽ पड़ैत अछि। आइ दुर्गा जी के लगे रहल कि नैहर से विदा गेल जा रहल अछि। 16 सेक्टर मिथिला सेवा संघ द्वारा मिथिला के परंपरा के अनुसार आप रंग गुलाल लगाया जा रहा है। एक भक्त दूसर भक्त के रंग गुलाल लगा रहा है। मिथिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम
जिला सेवा संस्थान द्वारा सेक्टर 16 कोई निशान मूर्ति प्रस्थान कर चुका है। जिला सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में मूर्ति पूरा करने की जिला सेवा संस्थान सेक्टर 16 पूजा स्थल से मूर्ति प्रस्थान कर चुका कमेटी अब कल
मैया को नाच करके विदाई कीजिए।
किसको देना है? आयुष इसका है, इसका है। इसको नीचे कर यार, इसको नीचे कर। नीचे कर लो। और क्या ये नहीं पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ने
किसी ने देखा है बैठो ऊपर आगे देखो देखो ना जब रुकेगा ना गाड़ी
आगे बढ़ा लो।
अभी हमें क्या पता चलता है क्या ब्लॉक लगा
सब उत्साहित है और अपन उत्साह से भरल है। सब दुर्गा जी के विसर्जन में शामिल है। सब अपन अपन मन के मनोकामना पूर्ण करवा के लिए दुर्गा जी के गंतव्य स्थान तक पहुँचावा में शामिल भेल है। आई सेक्टर 16 रोहिणी से अपने देख रहा छी मिथिला सेवा संस्थान द्वारा मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम सीधा प्रसारण सेक्टर 16 भारत के नहर पर हम पहुँच चुकल छी और गंतव्य स्थान यह डेस्टिनेशन यह अही ठमन मूर्ति के विसर्जन कल जाए। मिथिला सेवा संस्थान द्वारा दुर्गा जी के मूर्ति के अही ठमन अपने भव्य दर्शन कर सके छी। एकर बाद मूर्ति के जल में प्रवाहित कर दिल जाए। भाई हम कितना राजी है इसको बताइए। ये तो ऐसे कर भारी संख्या में मिथिला के मैथिल और मैथिलानी उपस्थित है। मिथिला सेवा संस्थान की तरफ से मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में रोहिणी सेक्टर 18 के नहर पर सबसे पहले यह नहर है सेक्टर 18 के नहर ये हरियाणा से पानी लग दिल्ली तक पहुँचे थे। दिल्ली वासी के जल साफ कऽ पिय के भेटैत अछि। पेयजल हरियाणा से अबैत अछि। नहर द्वारा मानव निर्मित नहर अछि। हरियाणा से पानी लायल जाइत अछि दिल्ली वासी के पियाबऽ के लेल एकरा शुद्ध जल मानल जाइत अछि। एकरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ कऽ पानी पियाल जाइत अछि। एही नहर में दुर्गा जी के विसर्जन है। मिथिला सेवा संस्थान के द्वारा मूर्ति अपन गंतव्य स्थान पर पहुँच चुकल अछि। काफी संख्या में तो मूर्ति उपस्थित है। देरी से खाली कल जाए समय लागत। एक गाड़ी खाली है तो दूसरी गाड़ी खाली है तखन तेसर गाड़ी खाली है। आई साबित कर रहा है कि पूर्वांचल के जे संख्या बल है वो निश्चित रूप से आप दिखाई दे रहा है। दुर्गा पूजा के आयोजन पूर्वांचल या बिहार या मिथिला के लोग करे। काफी संख्या में मूर्ति नमन आयल है और देख सके छी गाड़ी के कतार लागल है। ये गाड़ी सबसे आगा जे लागल है से खाली नहीं भेल है। वो खाली भऽ फिर वापस है। तकर बाद ओहि के बाद गाड़ी है गाड़ी लागल। मिथिला सेवा संस्थान के 2टा गाड़ी है। एकटा गाड़ी एखन रोडे पर लागल है। एकटा गाड़ी के अंदर कल गेल है।
लेकिन काफी समय लागत एखन एतऽ काफी भीड़ अछि। देख रहल छी जे गाड़ी खाली भऽ रहल है वो वापस आबि रहल है मूर्ति विसर्जन कऽ कऽ। आब हम एहिठमन मैथिलानी से किछु जानऽ चाहब जे हुनका सबके की अनुभव अछि। अपने ये बेर पहिल बेर आयल छियै या 2010 से शामिल छी। हुनका चेहरा पर हम 2010 से शामिल छियै पूजा में और बहुत ही नीक छै। बहुत नीक हमर मिथिला सेवा संस्थान के छै दुर्गा पूजा, जेकि बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै और सब पारंपरिक विधि विधान के साथ कयल जाइ छै। अपन मैथिल समाज के जे बहुत नीक प्रोग्राम छै जेमे हम सब कतौ रही शामिल होइते छै। अपने के केहन लागि रहल है? बहुत नीक लागि रहल है। सब आबै छै माता के दर्शन करे ले। मनोकामना सब लोग माता सबके पूरा करे छै। काफी संख्या में एहिठमन मैथिलानी पहुंचल छै। देर राति भऽ चुकल है, तकर बाद साहस के दाद देबऽ पड़त। एक दूर रास्ता चलि कऽ गंतव्य स्थान पर पहुंचल है। हम मिथिला सेवा संस्थान के दोसरो गाड़ी के लगायल जा रहा है लाइन में। ई दोसर गाड़ी है मिथिला सेवा संस्थान के। देख रहल छी जे गाड़ी खाली भऽ रहल है वो गाड़ी वापस आबि रहल है। फिर दोसर गाड़ी, फिर तेसर गाड़ी, फिर चारिम गाड़ी, एना क्रम में गाड़ी के ले जा रहा है अंदर और मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम अनवरत रूप से चलि रहा है। विशेषता है जे दुनू भाग चलैत अछि। ई एक तट पर अपने के हम देखा रहल छी। नदी के नहर के जो दोसर तट अछि ओहो तट पर जल प्रवाह कयल जाइत अछि मूर्ति के। अपने देख रहल छी 18 सेक्टर के नहर पर मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम सेक्टर 18 से अपने देख रहल छी लाइव। काफी संख्या में एठमन गाड़ी उपस्थित अछि। काफी समय लगैत अछि मूर्ति विसर्जन करऽ में, बेर से खाली करऽ पड़ैत अछि। पुलिस एठमन व्यवस्था में जुटल अछि। देख रहल छी इहो नहर अछि। इहो नहर अछि जेमे पानि जाइत अछि। बंगालों के द्वारा मूर्ति विसर्जन किया जाता है। बंगालियों के दुर्गा पूजा करैत अछि। हाँ, समस्या आइटम जरूर है। लाइट के व्यवस्था नहीं है। मूर्ति विसर्जन जब हो रहा है तब सरकार के द्वारा लाइट के व्यवस्था होना चाहिए। अगर आप
अपने देख रहल छी आ मूर्ति के जल में प्रवाहित करवा के कार्यक्रम शुरू भ चुकल है। गाड़ी से उतार रहल है। अगर सच मायने में कहा जाए तो आज यहाँ एक समस्या दिख रही है, जिस समस्या पर दिल्ली सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि दिल्ली सरकार को ज्ञातव्य है कि आज मूर्ति विसर्जन इस नहर पर की जाएगी, तो यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ भक्तों को काफी दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली सरकार को ये ज्ञातव्य है कि यहाँ मूर्ति विसर्जन होती है, तो दिल्ली सरकार को निश्चित रूप से आज के दिन यहाँ पर लाइट की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
वायर है यहाँ यार, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? वायर है।
और कंट्रोल लगे आगे बच्ची तो क्या असुर है गाली कर दियो और कंट्रोल लगी है ये मिथिला सेवा संस्थान द्वारा मूर्ति के विसर्जन के अंतिम चरण पर अपने पहुंच चुकल छे। देख रहल छी आई कार्यक्रम 18 सेक्टर पूर्णी के नहर 18 सेक्टर नहर से सीधा प्रसारण देख रहल छी, जतऽ खेद है जे दिल्ली सरकार द्वारा उचित प्रकाश के व्यवस्था नहीं कयलक। आरती के कार्यक्रम संपन्न भेल। आप मूर्ति के विसर्जन कयल जाय, मूर्ति के जल में प्रवाह कयल जाय। देख रहल छी प्रसारण सेक्टर 18 से। काफी संख्या में मैथिलानी सेहो उपस्थित छथि, काफी साहस के काज कर रहल छथि, काफी साहस के भरल ई काज अछि। एतेक संख्या में मैथिलानी उपस्थित छथि। अपने देख रहल छी सेक्टर 18 के नहर पर दुर्गा जी के विसर्जन में महिला और पुरुष कंधा से कंधा मिलाकर मिथिला सेवा संस्थान के कार्यकर्ता और मैथिलानी दुर्गा जी के विसर्जन में उपस्थित हैं। अब हम दिखा रहे हैं मिथिला सेवा संस्थान के अंतिम चरण कार्यक्रम। अब हम कार्यक्रम के रोकल जा रहा छी, आप कार्यक्रम समाप्त कर जा रहा छी। अब मूर्ति के जल में प्रवाह कयल जाए। तो अब हम प्रकाश के व्यवस्था नहीं भेला के कारण अपने के तो सीधा प्रसारण हम देखाबे में दिक्कत हो रहा है। प्रकाश रहे तो हम और आके सबके देखितो, लेकिन प्रकाश व्यवस्था नहीं भेला के कारण अब प्रसारण के हम रोकब। मूर्ति के विसर्जन कयल जाए। संभवतः सबका प्रक्रिया आपने देख लेलो। मूर्ति दुर्गा जी के अंतिम दर्शन अपने कर रहल छी। अब कभी के दिन पिछले क्षण में मूर्ति के जल में प्रवाहित कर दिल जाए। मिथिला सेवा संस्थान द्वारा सेक्टर 16 में जो दुर्गा पूजा के आयोजन चल 18वां आयोजन चल। जे दर्शक अपने मिथिला टीवी के कतौ से देश विदेश भारत से बाहर कतौ से देख रहल छी, उनका तमाम दर्शक के हमरा तरफ से धन्यवाद। अपने मिथिला टीवी के लाइव कार्यक्रम के देखलौं। ई कार्यक्रम मिथिला टीवी पर मिथिला सेवा संस्थान सेक्टर 16 जे एक गैर राजनीतिक संस्था है, वो वर्ष में धार्मिक कार्यक्रम करैत अछि। जेना आज दुर्गा पूजा केलक, दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के लाइव अपने देख रहल छी। अपने जतऽ से देखलौं जतऽ से देखलौं अपने धन्यवाद के पात्र छी। अपने तमाम दर्शक के हम एक बेर पुनः धन्यवाद दऽ रहल छी। अगर प्रकाश की व्यवस्था यहाँ होती तो शायद यहाँ एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता, क्योंकि काफी संख्या में मूर्तियां यहाँ आई है। इस मूर्ति को विसर्जन करने के लिए काफी भक्त लाइन में लगे हैं, लेकिन प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही। आशा करता हूँ कि दिल्ली सरकार इस पर विचार करेगी और आने वाले समय में यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करा देगी। जब हर सड़क पर लाइट है तो इस नहर पर लाइट क्यों नहीं? सोचने वाली बात है कि स्ट्रीट लाइट तो पार्क में भी लगी हुई है, तो फिर इस नहर पर लाइट होना क्या एक उचित नहीं है?
एक मूर्ति के जल में प्रवाहित कयल गेल, दोसर मूर्ति लऽ जायल जा रहल अछि। दूसरो मूर्ति के जल में प्रवाहित कऽ देल गेल। दुर्गा जी के मूर्ति के विसर्जन जल में प्रवाहित कयल गेल। हम कोशिश कर रहा छी जे बहुत दृश्य के अपने के दर्शन करा दी। गाड़ी से उतार लेंगे। अब जल में प्रवाह करबा के लिए धीरे धीरे हट बढ़ रहा है। मूर्ति के लऽ दुर्गा जी के मूर्ति के लऽ जल में प्रवाह करक लेल तट पर बढ़ चुकल है, किनार में पहुंच चुकल है। 18 सेक्टर के नहर में जल प्रवाहित करवा के लिए दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन होम जा रहा है। ई अंतिम कार्यक्रम अछि। अंकित चौधरी है। ए प्रफुल्ल एकानी टॉर्च मोबाइल की लाइट दूर कर दे वाला भैया। हां टॉर्च चला दी।
अब मूर्ति के विसर्जन के बाद मिथिला सेवा संस्थान के अध्यक्ष से हम जानना चाहब जे आइ ओ अब एहि अंतिम कार्यक्रम के कऽ कऽ की अनुभव कऽ रहल छथि और की संदेश देबऽ चाहि रहल छथि। सबसे पहले तो फिर से महात्मा महारानी की जय और हमार संदेश आ रहा था समाज में सब आदमी मिलजुल कर रहू अहिना नीक जगह धूमधाम से पूजा करू। जय माता की। धन्यवाद। अंतिम कार्यक्रम अपने देखलहुँ। अब हम मिथिला टीवी के लाइव कार्यक्रम एतऽ सँ रोकि रहल छी। धन्यवाद।